The team trains for 6 months, day in and out, and showcases the capabilities of is dedicated to all the beautiful ladies here. नागपुर एयरफेस्ट जब हुआ था हमने परफॉर्म किया और हमें बड़ा अच्छा लगता है नागपुर आना क्योंकि कॉलेज क्राउड बहुत है और टीम का एम जहाँ तक हम बात करें है यूथ को मोटिवेट करना ताकि वो डिफेंस करियर को भी एक ऑप्शन लेके चले। तो keeping that in mind, it is always very nice to see all the youth here, very excited to see us and cheering, clapping for us. So it's been a great experience for us. ये कई डिकेड से सूर्यकिरण है, जी 26 साल की। कैसे कैसे इसमें बदलाव आते गए और क्या क्या डिमांड आती गई इसमें? तो जैसे कि कहते हैं हर चीज़ के लिए पहले एक छोटी शुरुआत करनी होती है। तो 1996 में जब टीम सबसे पहली बार बनी थी तो हमने 2 एयरक्राफ्ट प्रैक्टिस करी, फिर 4 एयरक्राफ्ट प्रैक्टिस करी, 6 एयरक्राफ्ट और 9 एयरक्राफ्ट।
तो हम आपको बताना चाहेंगे कि पूरे विश्व में बहुत ही कम 9 एयरक्राफ्ट मिलिट्री एरोबैटिक डिस्प्ले टीम है, जिसमें से भारतीय वायुसेना के पास एक है। जैसा कि हम सब जानते हैं, भारतीय वायुसेना पूरे विश्व में चौथी सबसे बड़ी एयरफोर्स है, तो उसमें इस टीम का होना हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है।